Hello viewers, this is the new 2026 Sierra. You can check this is the top model of the Tata Sierra, and you can check this is the logo which is presented Tata, and you can check the emblem of the Sierra SIERRA, and you can check this is the headlight which is the booster function, and this is the LED DRLs with welcome and the exit function with turn indicators, and you can check that this is the present the fog lamp by projectors problems, and the front parking sensor which is present. You can check this is this is the top variant of the diesel automatic 6-speed automatic which is present. And this is the tire profiles. You can check this is the tube this tire, and you can check the tire profile which is the 225/55 R19 inches tire which is present. And this is the rating of the speed which is present, the 99h. And this is the you can check the alloy wheels design. This is the aero design of the alloy wheels, and this is the overall look of the car. And here also the badging which is present, the SIERRA, and this is the 360-degree camera angle view. You can check, and this is the uh, ORBM turn indicators which is present. This is the aero blade wipers, and you can check the aero blade wipers. And this is the flash light which is present on the door bar. And you can check that this is the rear side is also present, and you can just pop up this gun and it will open. This is the rear side. You can check, this is the curtain which is present, and this is the window roll down, up and down, and the 6 airbags which is present on this car is standard. This is the used panoramic sunroof which is present. This is the AC bands, rear AC version which is present. This is the hypercharged 65 watt which is present, the type A. And this is the type C fast charger 65 watt. And this is the some of the storage which is present, and the sliding armrest which is present. And this is the boss mode light. You can just slide the seat. And this is the headrest which is present. There's the branding which is present of the airbag. And this is the LED lights, pocket lights. You can check, this is the grab handle which is present. You can just uh, pop this like, and 12 JBL speaker which is present, and this is the part of that. And here the bottle holders which is present. And you can check the rear side of the car. This is the seat which is present. This is the perforated like, and you can check present. This is center armrest also present, and the center armrest which is also present here, the cup with the cup holders, headrest, and the armrest which is present. This is the headrest, and this is the armrest which is present, and 3 headrests present which is present for the middle passenger also. And there is the partial tray which is present, and it's the boot space which is, and it will extend up to the 1257 liter. You can check the length which is present, the 4340 mm, and you can check the width which is present, the 1841 mm, and you can check the height which is present, the 1715 mm from here to here. And all the variants which is present, the smart plus, pure plus, adventure plus, accomplished, and the accomplished which is present. And this is the diesel variant automatic, and you can check that this is the CRDI engine, common rail direct injection, 1.97 cc 4-cylinder, which produces the 118 PS power at the rate of 4000 rpm, and the 260 Nm of torque which is present, the 1500 to 2750 rpm for the manual. And the automatic transmission present the 280 Nm of torque, 1500 to 2750 automatic transmission.
and this is the 6-speed automatic transmission, and here the R, N, and D, and the parking. And this is the automatic climate control AC for that, and the dual zone climate control AC which is present. And you can check that this is the hypercharge 65 watt type C and type A. Some of the storage which is present you can check, and this is the sliding armrest, and this is the decut steering. You can check the armrest. This is the airbag bedding. This is for the wiper control. You can check. This is for the wiper control, and the pedal shifters which is present the minus and for the plus, and this is the control of the headlight. And this is the huge panoramic screen which is split into the three parts: instrument cluster, middle screen, and the personal screen. This is the AC bands, and this some of the airbag badging present, and the 12 speakers present the car. 12 JBL speakers. This is the auto IRBM and the airbag on off. You can check. Just focus on. And this is SOS emergency switch and telephone control. This is the light, vanity mirror. They have also light in the vanity mirror. And you can check the doors. This is the center AC. इसमें 6 वे एडजस्टेबल पावर सीट्स मिलती है विथ मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन है, विथ वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आती है इसमें, और इसमें लेवल 2 अडास मिलता है विथ 22 की फीचर्स के साथ। इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इसमें आपको पैसेंजर साइड इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलती है जो कि 31.24 सेंटीमीटर की होती है, और ये क्रिएट करती है वाइड एंड सिनेमैटिक इंटरफेस, और इसके ये कंपेटेबल है विद वायरलेस ईयरफोन एंड गेमिंग कंट्रोल करने के लिए। और इसमें जो सेंटर स्क्रीन दी गई है इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली, इसमें 28 प्लस कनेक्टेड ऐप्स मिलते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड ब्राउजिंग, और पैसेंजर इंफोटेनमेंट एंड सेंटर इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो रहती है, और यह आती है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। And you can check that this is the branding of Dolby Atmos. Dolby Atmos branding is present, and this is the present for the airbag on and off passenger side airbags. You can check, and you can insert the key into that, and you can just on and off the passenger airbag, and the Dolby Atmos branding. Total 12 speakers is present. 12 JBL speakers is present with the Dolby Atmos, and some of the for the just you can कोई भी चीज़ को जस्ट यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी जैसे कोई सामान वगैरह ये दिया गया है उसके लिए, एंड यू कैन जस्ट पॉप दिस वन, एंड यहाँ पे दिया गया है 2 किलोग्राम्स तक का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। ये फेब्रिक लाइक टेक्सचर यहाँ पे दिए गए हैं, और ये बेज में दिया गया है यहाँ पे सॉफ्ट टच में, और यहाँ पे सेंटर में भी यहाँ पे दिए गए फॉर द स्पीकर्स, और ये डिफ्रॉस्टर के लिए दिया गया है आगे यहाँ पे। जस्ट यू कैन चेक द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ द कार। यहाँ पे सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाता है, बट यहाँ पे ये जो गैस चार्ज सस्पेंशन मिलता है यहाँ पे, और आपको चेक कर सकते हैं। और जो रियर में जो टायर की जो प्रोफाइल यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे भी 225/55 R19 और 19H की यहाँ पे स्पीड बैजिंग यहाँ पे दी गई है, और ये एरो कट डिजाइन में यहाँ पे ये एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। विथ यहाँ पे ये
डिस्क ब्रेक्स आप चेक कर सकते हैं, डिस्क ब्रेक यहाँ पे दिया गया है यहाँ प्रॉपर। यस, यहाँ पे रियर में ये टायर्स आप चेक कर सकते हैं, स्टेपनी टायर है ये यहाँ पे। और फ्रंट में ये मैकपर्सन स्टड्स मिलता है विथ लोअर बुशबून के साथ, विथ एफडीडी दोनों में ही मिलता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। इसमें यहाँ पे दिया जाता है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रहता है, जो कि ऑटोमेटिकली जो बॉल होता है उसको मॉड्यूलेट करता है। लो स्पीड पे ये ज़्यादा टॉटल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, और हाई स्पीड पे ये थोड़ा स्टिफ हो जाता है फॉर बेटर हैंडलिंग के लिए। आप चेक कर सकते हैं मैकपर्सन स्टेप्स सस्पेंशन। This is the overall look of the car. You can check. This is the Tata Sierra top model, diesel, automatic, 6-speed automatic. And rear side is also you can check. यहाँ पे भी ये ब्रांडिंग दी गई है, SIERRA यहाँ पे। और यहाँ पे ये LED बार्स दिया गया है, यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है यहाँ पे, कनेक्टेड टेल लैंप्स। और यहाँ पे हिडन वाइपर्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हिडन वाइपर्स यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे ये वॉशर्स के लिए भी दिए गए। और ये रियर डिफॉगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये शार्प एंटीना लाइक यहाँ पे दिया गया है। So this is the overall look. Okay, I hope you like this video. So please do like, share and subscribe to the page and the channel. Okay, thank you viewers.